जेलेंस्की के साथ तू तू मैं पुष्पा स्टाइल में जेलेंस्की ने ट्रंप को दिखाए तेवर। फ्लावर नहीं फायर है मैं, झुकेगा नहीं। पुष्पा स्टाइल में जेलेंस्की ने ट्रंप को दिखाए तेवर और बिना डिनर किए व्हाइट हाउस से निकल गए जेलेंस्की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक तीखी बहस में बदल गई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर तीसरा विश्व युद्ध की आग भड़काने का आरोप लगाया और स्टूपिड यानी बेवकूफ तक कह दिया। If you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. I... You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, You haven't been allowed. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. जेलेंस्की से ओवल ऑफिस से बाहर निकलते ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन पर अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति फिलहाल रूस से युद्ध खत्म करना नहीं चाहते। I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He said, "Oh, I don't want a ceasefire." Well, all of a sudden he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty because without us, he doesn't win. बहस के बाद जेलेंस्की से जब माफी मांगने की बात हुई तो इस पर जेलेंस्की जरा भी नहीं हिचके और कहा कि हमें खुला और ईमानदार रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। जेलेंस्की के तेवर देखकर ट्रंप दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की इस तरह से बात करेंगे। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with all backed respect to you your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश जब तक रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा, जब तक उसे किसी अन्य हमले के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। अब बड़ा सवाल ये है कि इस विवाद का असर यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर पड़ेगा या नहीं। ट्रंप के रुख से साफ है कि यूक्रेन को अब तक मिलती आई आर्थिक और सैन्य सहायता पर रोक है। ऐसे में जेलेंस्की के लिए आने वाले समय में अमेरिका से समर्थन बनाए रखना एक चुनौती होगी। इन सब के बीच यूरोप के कई नेताओं की तरफ से जेलेंस्की के प्रति समर्थन जताया जा रहा है। इस बैठक पर अभी रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। देखना होगा कि अब आगे क्या मोड़ आता है।